Meet Neha, a supermom who juggles her career and family with grace and determination. Like many working moms in the morning, she rushes around the kitchen, preparing breakfast for her family. As Neha sets the table, her husband, Jay, and daughter Ria come into the kitchen, ready for breakfast. Neha serves a healthy and delicious breakfast to her family, and they all sit together at the table. Neha's laptop and mobile are kept on the kitchen counter, clearly indicating that she has to rush for the office after breakfast. And this is the story of not just Neha, but every working mom, isn't it? Yes. Hello everyone, and welcome back to our channel Healthy She. In today's video, we will be talking about those working moms who are juggling between their careers and their family responsibilities. We understand that it is very challenging to maintain a healthy work-life balance. So we have come up with some quick and effective tips that will help you maintain a perfect harmony between your work and your family life. So let's get started. Coming to tip number 1, set boundaries for yourself. Assign specific work hours and hours for family life and try to stick to them. This will prevent your work spilling into your family life and vice versa. अब आप कहेंगे मैम कॉर्पोरेट जॉब्स में तो ये पॉसिबल ही नहीं है. Maybe it's a 9 to 5 job or a 10 to 6 job. But even after returning home, you have to work on your laptop for few hours. कभी बॉस का फ़ोन आ जाता है किसी प्रेजेंटेशन के लिए, तो कभी कुछ ना कुछ काम आ ही जाता है. तो how can we set boundaries? I agree. But despite working in a corporate, you can assign specific work hours for yourself and communicate this to your employer. Suppose you are at home and spending some time with your family. You can communicate this to your boss and ask them that if it's not urgent, you can do the work later. Learn to say no when there is a need. I have made a separate video on how to say no without feeling guilty either to your boss or to your family members whenever there is a need. Watch that video at the link in the description below. Tip number 2, prioritize your tasks. अब हर काम equal priority का नहीं होता है, whether it is at work or whether it is at home. So you have to see which work is more important for you and prioritize that and finish that first rather than the other unimportant tasks. This way you can prevent overwhelmed feeling and also protect yourself from burnout. Tip number 3, utilize technology. Nowadays, there are so many productivity apps, reminders, apps where you can make your to-do list, you can make your short sticky notes of what to do during the day. Utilize these apps and manage your time effectively. When you manage your time effectively, you will see that जो आपको एक रश होता है कि यार ये भी काम करना है, वो भी काम करना है, कहीं मेरे माइंड से कुछ स्लिप आउट ना हो जाए, ये जो एंग्जाइटी होती है काम के प्रति, वो सब चीज़ें अपने आप कम हो जाएंगी. So start leveraging technology and the productivity apps, to-do list apps, and see the difference in your work-life balance. Tip number 4, delegate and share responsibilities. अब अक्सर हमारे घर में एक हाउसमेट्स तो होती ही हैं, बट उसके अलावा भी हमको काम करना ही पड़ता है. अब मॉम कैन नॉट सिट कि हाँ एक मेड लगी हुई है या कुक लगी हुई है, शी कैन डू ऑल द वर्क एंड शी कैन जस्ट फोकस ऑन हर करियर. ऐसा कभी नहीं होता है. एम आई राइट और रॉन्ग? लेट मी नो इन द कमेंट्स. सो अपार्ट फ्रॉम द हाउस हेल्प, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर पार्टनर. अगर आपके बच्चे बड़े हैं, किड्स बड़े हैं, यू कैन ऑल्सो डेलीगेट सम हाउस होल्ड चोर्स टू देम. उनसे भी आप मदद मांग सकते हैं. इवन एट द वर्क प्लेस, यू कैन आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम योर कलीग्स. So try to delegate responsibilities wherever you can to the appropriate people at home and at workplace.
Moving on to our next tip is creating a family calendar. जैसे कि प्रोडक्टिविटी एप्स होते हैं वैसे ही यू कैन यूटिलाइज टेक्नोलॉजी वेयर यू कैन प्रिपेयर अ कैलेंडर ऑफ इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज, सम इम्पॉर्टेंट ओकेजन्स, सम चाहे आपकी हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ हैं, कोई फंक्शंस हैं, कुछ कोई त्यौहार या फेस्टिवल आने वाला है, उसके लिए आपको कुछ प्रिपरेशंस करनी है. Accordingly, you can make that calendar which is shared by all your family members so that सभी family members एक पेज पे हैं, सभी को पता है कि ठीक है, suppose you have an important meeting for a particular day, mark that into your calendar and share that calendar with all the family members so that they know कि आपकी इस दिन एक important presentation है and you won't be available for household chores for that much time as you have to give it to the workplace. So share a family calendar with all your family members. Moving on to our next step, set realistic expectations. अब expectations चाहे दूसरों से हो चाहे अपने आप से. You must understand that all days will not be equal. हो सकता है किसी दिन आपको अपने वर्क प्लेस पर ज़्यादा टाइम देना पड़े एंड किसी दिन आपका वर्कलोड इतना ज़्यादा नहीं है तो अपने फैमिली में ज़्यादा टाइम दे सकते हैं. तो ये आपके माइंड में होना चाहिए, एक्सपेक्ट दिस. और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी और अपने चाहे वर्क कलीग्स हैं, आपके बॉस हैं, उनसे भी ये एक्सपेक्टेशंस क्लियरली सेट करके रखें कि आप किस समय कितने समय के लिए आप उनके लिए अवेलेबल हैं. जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला था, सेटिंग बाउंड्रीज के साथ साथ आपकी एक्सपेक्टेशंस भी अपने आप सेट होंगी. जब आप एक बाउंड्री सेट करेंगे तो people will expect कि okay, when you are not available for this time, so they automatically won't assign that task to you at that time. So make sure that you set realistic expectations from yourself as well as tell this to others. To our seventh tip, and that is very important, taking out time for yourself. Moms जो होती हैं डेली की हसल बसल में अपने आप को कंप्लीटली भूल जाती है. अपनी केयर करना, अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ की केयर करना वो कंप्लीटली भूल जाती है. होता क्या है, अल्टीमेटली विद पैसेज ऑफ टाइम उनकी हेल्थ डिटेरियोरेट होनी शुरू हो जाती हैं. हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल और मे बी स्ट्रेस, ये सब दिक्कतें हेल्थ प्रॉब्लम्स धीरे धीरे शुरू हो जाती हैं वर्किंग मॉम्स के साथ. तो ये सब चीज़ें ना हो, इट्स ऑलवेज बेटर दैट यू टेक आउट सम टाइम फॉर योर सेल्फ डेली. चाहे वो 15 मिनट ही क्यों ना हो, उस 15 मिनट में डू सम एक्टिविटी दैट यू एंजॉय. इट कैन बी सम एक्सरसाइज, इट कैन बी रीडिंग अ बुक, कोई भी लेजर एक्टिविटी, कोई भी आपकी हॉबी है जो आपको पसंद है, आपको एक रिलैक्सेशन देती है. Do take out time daily for that thing and practice that. Coming to our next tip, and that is communicate your work-life balance needs to your employer. जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा था कि अगर आपका बॉस आपको odd times पे कुछ काम देता है, when you are not available, when you are spending time with your family and you don't want to get engaged with any office work, communicate this to your employer. And with many companies today, they are offering flexible work options. तो ऐसा नहीं है कि अगर आप ऐसा कुछ कम्युनिकेट करते हैं तो आपकी जॉब चली जाएगी या आपका बॉस आपसे नाराज़ हो जाएगा. ये सब डर अपने मन से निकाल दीजिए. Whatever are your needs, whatever you feel is suitable, how you can maintain a work-life balance, that needs you should communicate with your employer, talk out with them so that एक बीच का रास्ता, एक ऐसा रास्ता निकल सके जो कि आपके लिए भी सूटेबल हो और आपके बॉस के लिए. Moving to our 9th tip, and that is avoid multitasking. होता क्या है, इवन किचन में भी मैंने कई बार नोटिस किया है, कुछ लोग क्या करते हैं, एक तरफ सब्ज़ी भी काट रहे हैं, एक तरफ गैस पे कुछ चढ़ा दिया, फिर एक तरफ बच्चों को भी कुछ ठीके लगा दिया कि चूँकि तुम इतना काम करो, मैं इतना ये देख कर आती हूँ, 5 मिनट में सब्ज़ी काट कर आ रही हूँ. और मे बी ऑफिस में भी आपने मल्टीपल टैब्स अपने लैपटॉप पे ओपन कर रखे हैं टू डू नो मल्टीटास्किंग. ठीक है, 5 मिनट इस टैब पे काम किया, 5 मिनट उस टैब पे वहाँ काम किया. इस तरीके से मल्टीटास्किंग हम लोग करते हैं.
उसका असर क्या होता है माइंड पे कि माइंड एक रेस्ट पे नहीं हो पाता है एंड आप देखेंगे कि मेंटली आप बहुत जल्दी थक जाते हैं। मेंटली थकेंगे तो फिजिकली भी ऑल्सो यू विल फील टायर्ड वेरी इजीली। So I'm not saying sometimes we can do 2 or 3 tasks together. That can be clubbed up, whether at work or at home. But when you are doing too many tasks at a time, whether it is at the workplace or whether it is at your home, it will, mentally it will tire you. Physically, it will be overwhelming for you. So avoid that multitasking. And coming to our final tip, and that is be present and engage with your family. When you are there with your family and you are spending time with your kids, with your husband, उस टाइम फुली एंगेज हो। ये नहीं है कि एक तरफ तो आप अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, ईमेल्स चेक कर रहे हैं, अपने वर्क ईमेल्स चेक कर रहे हैं, और एक तरफ आपके किड्स आपको कुछ बोल रहे हैं, आप हाँ हाँ हूँ कर रहे हैं, या आपके हस्बैंड कुछ बोल रहे हैं एंड you are listening, you are showing that you are listening to them, but actually your mind is somewhere else. तो this is also very overwhelming and आपको लगेगा कि मैं अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, आपको एक गिल्ट फीलिंग भी आएगी उसके वजह से। तो to avoid all these emotions, it's better when you are spending time with your family, उनके साथ आप पूरी तरीके से present हो, mentally भी present हो। It's not the quantity of time, भले चाहे आप एक पूरे दिन में चाहे आधा घंटा भी अपनी फैमिली के साथ बिता रहे हैं, that आधा घंटा should be completely engaging. You should be completely present mentally with them so that आपको वो enjoyment मिले और आपको वो satisfaction मिले कि I have spent time with my family and I have balanced my work with my family time. So guys, here's a quick recap to all the 10 tips which we have discussed about maintaining a healthy work-life balance. Number 1 is setting boundaries. Number 2 is prioritizing your tasks. Number 3 is utilizing productivity and time management apps. Number 4 is delegating and sharing responsibilities wherever possible. Then number 5 is creating and sharing a family calendar. Then next is setting realistic expectations of yourself and for others. Then taking out time for yourself daily. Communicating your work-life balance needs to your employer. Avoid multitasking. And finally, be present and engaged when spending time with your family. Remember, work-life balance कोई एक दिन का काम नहीं है. It is an ongoing process. किसी दिन work ज़्यादा होगा, किसी दिन family time ज़्यादा होगा. You have to make adjustments from time to time. And किसी दिन आपको ऐसा लगेगा कि मैंने work-life balance achieve कर लिया है. Celebrate that day. छोटी छोटी victories को भी celebrate कीजिए. और किसी दिन अगर balance नहीं भी हो पाया, it's okay. Stay calm. दोबारा से कोशिश कीजिए. It will happen the next day. So don't worry about that. So that's all for today's video. प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपने आज क्या सीखा, आपको आज की वीडियो में क्या पसंद आया. What tip did you like the best from us? And if you like this video, please share this video with other working moms to help them create a healthy work-life balance. For more useful content on how to achieve your health goals and how to maintain your health as a working woman, please subscribe to our channel. Till then, take care.